Hello everyone. Welcome to all of you in live FFB chemistry class. केमिस्ट्री क्लासेस में तुम लोगों से काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस हो चुका है। इस लास्ट हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे इन्वायरमेंट केमिस्ट्री पे। इन्वायरमेंट केमिस्ट्री के डिफरेंट टॉपिक्स पे हमने अलग अलग वीडियोस भेजे हैं जिसमें कि इन्वायरमेंटल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, उसके अलावा इन पॉल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। उसके अलावा हमने रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था। आज हम नॉइस पॉल्यूशन, जो कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से ही जुड़ा हुआ टॉपिक है, नॉइस पॉल्यूशन पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि पॉल्यूशंस में रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बाद जो नॉइस पॉल्यूशन है, ये भी हमारे जो लाइफ है साइकिल है उसको डिस्टर्ब करता है, तो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, एनिमल्स को डिस्टर्ब करता है। तो नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है और इसके सोर्सेस क्या हैं, किस वजह से ये हो जाता है, और उसके अलावा इसको हम कंट्रोल किस तरह से करते हैं ताकि अपने जो हमारी लाइफ है उसको हम इसके हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकें। तो नॉइस पॉल्यूशन भी एक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, तो इसलिए इस टॉपिक पे भी डिस्कशन करना ज़रूरी है ताकि कोई चीज़ बाकी ना रह जाए। तो नॉइस पॉल्यूशन इस तरह का, ये जो पिक्चर है इससे देख करके समझ सकते हो कि किस तरह से नॉइस पॉल्यूशन जो है हमें इफेक्ट करता है, कितना हमारे लिए ये खतरनाक है। तो आज हमको इसी टॉपिक पे डिस्कस करना है। इस डायग्राम से देखो, नॉइस पॉल्यूशन चारों तरफ के शोर से क्या इफेक्ट एक इंसान पे पड़ सकता है, वो इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बहुत जो हमने जानकारी कलेक्ट की है उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। नाउ नॉइस पॉल्यूशन इन शॉर्ट, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज नॉइस पॉल्यूशन। एनी अनवांटेड, डिस्टर्बिंग और हार्मफुल साउंड that impairs or interferes with hearing, cause stress, hampers concentration and work efficiency, or causes accidents called noise pollution. This is the definition, simple definition of noise pollution, जो इसमें देख सकते हो इसको, इस फोटोग्राफ में किस तरह से ये चारों तरफ के नॉइस पॉल्यूशन से क्या इफेक्ट किसी पे पड़ सकता है, ये इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। उसके बाद व्हाट इज साउंड एंड व्हाट इज नॉइस, इसका हम शॉर्ट पे इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, साउंड एंड नॉइस। The word noise comes from the Latin word noxia, meaning injury or hurt. Noise is an unwanted, unpleasant, and annoying sound caused by vibration of the matter. Vibration imping on the ear, like this. Vibrations imping on the eardrum of a human or animal and set up a nervous disturbance which we call sound. इस तरह से ये साउंड यहाँ पे कानों में पड़ती है और हमें सुनाई देती है। When the effects of sound are undesirable, that it may be termed as noise, यानी कि शोरगुल। Now what is noise pollution? Definition अभी शॉर्ट में हमने बताया था शुरुआत में। Noise pollution is generally defined as regular exposure to elevated sound level that may lead to adverse effect on human or other living organism. According to the World Health Organization, sound levels less than 70 dB, this is the measurement of sound intensity,
are not damaging to living organisms, regardless of how long or consistent the exposure is. Exposure of more than 8 hours to constant noise beyond 85 dB may be hazard. This is the decibel measure of the sound intensity may be hazardous. Eh, The exposure of more than 8 hours to constant beyond 85 dB may be hazardous. If you work for 8 hours daily in close proximity to a busy road or highway, you are very likely exposed to traffic noise pollution around 85. This type of pollution or noise pollution is so omnipresent in today's society that we often fail to even notice to anymore. First, street traffic sound from ears, buses, pedestrians, ambulance, etc. Construction sounds like drilling or other heavy machinery in operation. Airports with constant elevated sounds from air traffic, that is, planes taking off or landing. Workplace sounds often common in open space offices. Constant sound music in or near commercial values. Industrial sounds like fan generators, compressor mills. Now train station traffic. Household sounds from the television set to music playing on the stereo or computer, vacuum cleaners, fans and coolers, washing machine, dishwasher, lawnmowers, etc. Even involving fireworks, firecrackers, loudspeaker, etc. These are the sources of causing noise pollution. Events involving fireworks, firecrackers, loudspeaker. Now conflicts generate noise pollution through explosions, gunfire, etc. The dysfunctions in this case are likely caused by the conflict and security insecurity and less by the noise pollution in itself, although that compounds stress level too. डेफिनेशन नॉइस पॉल्यूशन की अभी हम डिस्कस कर चुके हैं दो जगह इस बारे में तो नॉइस पॉल्यूशन इज ऑफ two types: outdoor noise pollution and indoor noise pollution. Outdoor noise pollution, the source of most outdoor noise pollution worldwide, is mainly caused by machines and transportation system, motor vehicles, aircraft and trains. Poor urban planning may give rise to noise pollution. Second types of noise pollution is indoor noise pollution. This is the diagram. Yeah, this is the picture, not diagram. Indoor noise pollution can be caused by machines, building activities, and music performance, especially in some workplaces. इस तरह से ये क्या है? Outdoor noise pollution, and this is the indoor noise pollution. ड्रिल करने में या इस तरह से काम करने पे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, नॉइस यानी शोर प्रोड्यूस होता है, वो cause of which is the cause of noise pollution. Now common outdoor sound level and common indoor sound levels. तो ये levels dBA में दिया है, लेकिन यहाँ मेनली हमें डिस्कस क्या करना है? कॉमन आउटडोर नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाले जो सोर्सेज हैं और ये कॉमन इंडोर साउंड या नॉइज पोल्यूशन प्रोड्यूस करने वाले सोर्सेज. तो साउंड लेवल से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कॉमन आउटडोर सॉल्वेंट, common outdoor sound producing sources are jet flyover,
horn noise, train at 100 feet, this is 1000 feet, and motorcycle. And second outdoor noise sound producer is diesel truck and general goods train and noisy urban daytime. And other outdoor sound producing elements is commercial areas, heavy traffic. This is heavy traffic at 3000 feet and क्वाइट अर्बन नाइट टाइम. उसके बाद ये जो साउंड है उसकी जो इंटेंसिटी है ये कम होती जाती है 70 to 60. ये बियरेबल साउंड लेवल होता है, उसके बाद ये कम होने लगता है. उसके अलावा क्वाइट सब अर्बन नाइट टाइम एंड रूरल नाइट टाइम एंड देन क्वाइट रूरल नाइट टाइम. तो इस तरह से ये साउंड इन आउटडोर साउंड लेवल है. और दूसरी तरफ कॉमन, दिस इज आउटडोर, दिस इज इंडोर साउंड लेवल. इंडोर में डेंस क्लब म्यूजिक इनसाइड सबवे ट्रेन. एंड सेकेंड मिक्सर ग्राइंडर, garbage disposal, very loud speech. These are the indoor producing sound. Now vacuum cleaner, where intensity is 60 to 70 to 66 एंड नॉर्मल स्पीच. तो ये बियरेबल होता है. उसके अलावा इंडोर नॉइस कहाँ से प्रोड्यूस होती है? लार्ज बिजनेस ऑफिस, क्वाइट स्पीचेस, डिश वॉशर इन नेक्स्ट रूम. उसके अलावा अब लो फ्रिक्वेंसी इंडोर साउंड में कहाँ की होती है? स्मॉल थिएटर, लार्ज कॉन्फ्रेंस रूम, लाइब्रेरी एंड बेडरूम at night, concert hall, broadcast and recording studio, and these are the threshold energy level. क्या होता है? 0 dB. now in short हमारे आते हैं नॉइज पोल्यूशन पे. अगेन ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद शॉर्ट में हम किस तरह से नॉइज पोल्यूशन डेफिनिशन और एंड नॉइज पोल्यूशन कॉज बाय एंड कंट्रोल शॉर्ट में किस तरह से कर सकते हैं डिफाइन. Definition of noise pollution is noise pollution is displeasing human, animal, or machine creating sound that disrupt the activity or balance of human or animal life. Now, noise pollution caused by traffic noise, अभी डिस्कस कर चुके हैं जिन सब के बारे में. एयरक्राफ्ट नॉइस, noise from construction and civil engineering works, noise from industries, noise from other sources. Now, effect of noise pollution. First, hearing loss, high blood pressure, stress, sleep disturbance, and color blindness. These are the effects produced by noise pollution. Now, household sources of producing noise pollution. First, gadgets like food mixer, grinder, vacuum cleaner, washing machine, and dryer, cooler, air conditioners can be very noisy and injurious to health. Others include loudspeakers of sound systems and TVs, iPods, and earphones. Another examples may be your neighbor's dog barking all night, every day at every shadow. It sees disturbing everyone else in the apartment. Now this is the picture in which we can see the noise producing instruments like high, से जैसे जेट इंजन, रिवर हैम्पर, ये क्या है? ये हाईली इंजूरियस होती है क्योंकि इनकी जो साउंड इंटेंसिटी है 140 to 130 dB, यानी
होती है डेसी बेल, तो ये हाईली इंजूरियस साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा चेन सॉ, हैवी ट्रक 120 एंड 90 ये इंजूरियस साउंड लेवल है जो इन दोनों से प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा रिस्की कार की साउंड 80 dB, लिटिल रिस्क 70 to 30 के बीच कन्वर्सेशन और विस्परिंग में ये लिटिल रिस्क होता है, बहुत ज्यादा हार्मफुल इस डीबी की वॉइस नहीं होती। नाउ कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग नॉइस पोल्यूशन, printing presses, manufacturing industries, construction sites contribute the noise pollution in large cities. In many industries, it is a requirement that people always wear earplugs to minimize their exposure to heavy noise. People who work with noisy equipment are required to wear noise-proof gadgets. Now, effects of noise pollution. Effects of noise pollution. Noise pollution affects both health and behavior. Unwanted sound can damage physiological health. Noise pollution can cause annoyance, aggression, hypertension, high stress level, hearing loss, sleep disturbance, and other harmful effects. Now we see again noise pollution effect. Permanent hearing loss may be possible. High blood pressure, insomnia, labored breathing, stress, altered brain chemistry, increase in crime, permanent damage to the noise. This is the cause effect of noise pollution. Now, effect of noise pollution on physical health. तो शॉर्ट में हम ये डिस्कस करते चल रहे हैं कि क्या इफेक्ट नॉइस पोल्यूशन का पड़ता है। यहाँ हम इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन और फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा डिस्कस करते हैं। The most direct harmful effect of excessive noise is physical damage to the ear and the temporary or permanent hearing loss, often called a temporary threshold shift, that is TTS. Permanent loss, usually called noise-induced permanent threshold shift, in short NIPTS, represent a loss of hearing ability from which there is no recovery. Some of the adverse effects are summarized here. Annoyance, it creates annoyance to the receptors due to sound level fluctuations. The aperiodic sound due to its irregular occurrences cause displeasure to hearing and cause annoyance. Now, physiological effects. The physiological features like breathing, amplitude, blood pressure, heartbeat rate, pulse rate, blood cholesterol are affected. Now, loss of hearing. Long exposure to high sound level cause loss of hearing. This is mostly unnoticed but has an adverse impact on hearing function. Now, human performance. The working performance of workers men will be affected as they will be losing their concentration. The emotional or physiological effect. Irritability and anxiety and stress, lack of concentration and mental fatigue are significant health efforts of noise. It has been observed that the performance of school children is poor in comparison tasks, comprehension tasks when schools are situated in busy area of a city and suffer from noise pollution.
that is disturbance. Now, it has been observed that the performance of school children is poor in comprehension tasks. When schools are situated in busy areas of a city and suffer from noise pollution, that is disturbance. Interference with normal auditory communication. It may mask auditory warning signals and hence increase the rate of accidents, especially in industries. The effect can range in severity from being extremely annoying to being extremely painful and hazardous, lowers workers' efficiency and productivity, and higher accident rates on the job. According to the US EPA, there are direct link between noise and health. Also, noise pollution adversely affects the lives of millions of people. Noise pollution can damage physiological and psychological health. High blood pressure, stress-related illness, sleep disruption, hearing loss, and productivity loss are the problem related to noise pollution. It can be cause memory loss, severe depression, and panic attacks. तो अभी तक हम यही डिस्कस कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन. नाउ हाउ हियरिंग लॉस ऑकर्स. जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड बढ़ती जाती है, इसके नुकसान भी बढ़ते जाते हैं. यहाँ पे ये 80 dB डेसिबल्स वॉशिंग मशीन की जो साउंड होती है वो बियरेबल है. उसके अलावा उससे ज्यादा जैसे कि ट्रैफिक नॉइस इनसाइड ए कार, वो भी बियरेबल 70 to 80 dB है. उसके बाद ये धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ रही है 100 dB, उसके बाद 90 dB, 100 dB स्पेसिंग इवेंट में. उसके अलावा रॉक कंसर्ट यानी म्यूजिकल, जब बहुत ही तेज साउंड की म्यूजिक होगी तो 110 dB हो जाता है. सायरन की होती है 120. तो जैसे जैसे ये लेवल बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारे लिए नॉइस जो है ये हार्मफुल होती जाती है. 85 dB is the approximate point at which extended exposure can cause hearing damage. तो 85 से ऊपर जाने पे ये डैमेज शुरू होता है. किस तरह से? दिस इज द ईयर ऑफ द ह्यूमन. साउंड जो यहाँ पे इस तरह से वेव, साउंड की वेव यहाँ पे पड़ती है कान पे, तो यहाँ पे ये हेल्दी हेयर सेल्स इस तरह से होती है और इस साउंड के इफेक्ट से वो डिस्टर्ब हो जाती है और डैमेज हेयर सेल्स, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई देता है. नाउ साउंड वाइब्रेट्स द अर्थ ड्रम एंड टाइनी बोन्स इन द ईयर, which in turn vibrate the hair cells in the inner ear. Exposure to loud noise over time can permanently damage the hair cells, causing hearing loss. तो इस तरह से hearing loss होती है. तेज आवाज लगातार इस तरह से कानों पे पड़ेगी तो ये सेल्स डैमेज हो जाती हैं और हियरिंग लॉस होता है, यानी कि परमानेंट हियरिंग डैमेज होती है. तो नॉइस पोल्यूशन को कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं. शोर शराबा, अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये इस तरह से सारी चीजें इसमें दिखाई हुई है किस तरह से नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस होता है. In short, in an interesting picture like this, इस तरह से नॉइस पोल्यूशन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं. नॉइस बैरियर्स, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक कार्स, ये सारी चीजें क्या है, ये सब नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करती है और इन सब का इफेक्ट इधर हमें दिखाई देता है. और इसको हम किस तरह से रोक सकते हैं इसको भी इसी डायग्राम में, इस पिक्चर में बताने की कोशिश कर गई है.
बिल्डिंग इंसुलेशन करके, चेंजिंग ड्राइविंग स्टाइल, ये सारी चीजें जो है इस तरह से पूरा एक राउंड उसमें दिखाया गया है। नाउ इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ की नॉइज हमें परेशान करती है। The source of the most outdoor noise worldwide is mainly caused by machines and transportation system, motor vehicles, aircraft and trains। तो किस तरह से किसी को ये साउंड जो है चारों तरफ की डिस्टर्ब कर रही है। Too much noise, एरोप्लेन फ्लाइंग ओवर जाने पे, मूविंग and honking vehicles, industrial production noise, म्यूजिक, डिस्को, नाइबर डॉग पार्किंग, ये सारी चीजें पूरी तरह से किस तरह का इफेक्ट होगा ये इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। Now effect on animals. Noise pollution damage the nervous system of animals, increase of that by altering the prey predator detection and avoidance. An animal loses the control of its mind, creates problem in their use of sound in reproduction and navigation. They become dangerous and attacking. In short, we see the effect of noise pollution on animals' life. Noise pollution from ship engine. Noise pollution from ship in equip. Noise pollution from ship engines and solar system make it difficult for marine mammals like whales, dolphins, and prevent it from communication, finding food, and avoiding hazards. Excessive noise has the ability to raise an animal's heartbeat, speed, and even harm an animal's metabolism. Now, effect of noise pollution on wildlife and marine life. Our oceans are no longer quiet. Thousands of oil drills, sonars, speak survey devices, coastal recreational watercraft and shipping vessels are now populating our waters, and that is a serious cause of noise pollution for marine life. Whales are among the most affected as their hearing helps them orient themselves, feed, and communicate. Noise pollution thus interferes with cetaceans, whale, and dolphins, which is feeding habits, reproductive pattern, and migration routes, and can even cause hemorrhage and death. Other than marine life, land animals are also affected by noise pollution in the form of traffic, firecrackers, etc., and birds are especially affected by the increased air traffic. Now, human disease caused by noise pollution. Whether we realize we are subjected to it or not, noise pollution can be hazardous to our health in various ways. First is hypertension. Hypertension is in this case a direct result of noise pollution cause elevated blood vessels for a longer period of time. Hearing loss can be directly caused by noise pollution, where is listening to loud music in your loud headphones or being exposed to loud drilling noise at work, heavy air or loud land traffic, or separate incidents in which noise level reach dangerous intervals, such as around 140 dB for adult or 120 dB for children. Now, sleep disturbance are usually caused by constant air or land traffic 120 dB for children. Not this is not यहाँ से हम इसको देख सकते हैं
Sleep disturbance are usually caused by constant air or land traffic at night, and they are a serious condition in that they can affect everyday performance and lead to serious disease. Now, child development. Children appears to be more sensitive to noise pollution, and a number of noise pollution related diseases and dysfunctions are known to affect children from hearing impairment to physiological and psychophysical effects. Also, children who regularly use music players at high volumes are at risk of developing hearing dysfunction. In 2001, it was estimated that 12.5% of American children between the age of 6 to 19 years had impaired hearing in one or both ears. Various cardiovascular dysfunction, various cardiovascular dysfunctions, elevated blood pressure caused by noise pollution, especially during the night, can lead to various cardiovascular diseases. Dementia is not necessarily caused by noise pollution, but its onset can be favored or compounded by noise pollution. Now, physiological dysfunctions and noise anions, in fact, they recognize name for an emotional reaction that can have an immediate impact. Tips for avoiding noise pollution. Wear earplug when you are exposed to elevated noise level. Maintain a level of around 35 dB in your bedroom at night and around 40 dB in your house during the day. If possible, choose your residential area as far removed from heavy traffic as you can. Avoid prolonged use of earphones, especially at elevated sound levels. If possible, avoid jobs with regular exposure to elevated sound. Now, noise control at source. First, reducing the noise level from domestic sector. The domestic noise coming from radio, tape recorder, television sets, mixer, washing machines, cooking operations can be minimized by their selective and judicious operations. By usage of carpets or any absorbing materials, the noise generated from falling of items in-house can be minimized. Second, maintenance of automobiles. Regular servicing and tuning of vehicles will reduce the noise level. Fixing of silencers to automobiles, two-wheelers, etc. will reduce noise levels. Now, control over vibrations. The vibrations of material may be controlled using proper foundations, rubber padding, etc. to reduce noise level caused by vibrations. Low voice speaking, another method. Speaking at low voice enough for communication reduce the excess noise level. Now, prohibition on usage of loudspeaker. By not permitting the usage of loudspeaker in the habitat zones except for important meetings functions. Nowadays, the urban administrations of the metro cities in India is becoming stringent on usage of loudspeakers. Now, social and economic cost of noise pollution. The World Health Organization estimates that 1 out of 3 people in Europe is harmed by traffic noise. More than the purely medical effects of noise pollution on the individual, there is a significant social and economic impact.
Since noise pollution leads to sleep disturbance, it affects the individual work performance during the day. It leads to hypertension and cardiovascular disease and cause the health system additional time and money, and it negatively affects school performance in children. किस तरह से ये साउंड वेव्स पहुंचती है, किस तरह से इनका जो इंटेंसिटी जो है यहाँ तक पहुंचती है, ये उसका जो है एक उसका शो ऑफ है। उसके अलावा सिंपल स्टेप्स टू कंट्रोल नॉइस पोल्यूशन अभी कुछ हमने डिस्कस किया, और यहाँ चार्ट में एक चार्ट के थ्रू दिखाया गया है जिसको इस तरह की चीजें जो है प्रोजेक्ट बनाने में या जो एक मॉडल बनाने में यूज की जा सकती है। नाउ मेक योर सेफ्टी a priority. First, stop unwanted honking. Second, restrict loudspeakers in event. ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस हुई है। Third, noisy machine installed in soundproof chambers. Fourth, siren use only emergency service. Silent zone should be created. Now, for more such ways, read our full articles. This is given by the author Rachel Beaudry. This is the writer's name, which gives these points for the control of noise pollution. And this he said that for more such ways, read our full article. तो इसको आप सर्च करके पढ़ सकते हो अगर चाहो तो। उसके बाद है सॉल्यूशंस फॉर नॉइस पोल्यूशन। ये अभी हम बार बार इस चीजों को हम रिपीट भी कर रहे हैं, कहीं नए तरीके से कहीं पुराने तरीके से। तो दिस इज द सॉल्यूशंस फॉर नॉइस पोल्यूशन। प्लांटिंग bushes and trees in and around sound generating sources is an effective solution for noise pollution. The regular servicing and tuning of automobiles can effectively reduce the noise pollution. Yes, तो first point फिर से देख लेते हैं। Planting bushes and trees in and around sound generating source is an effective solution for noise pollution. Regular servicing and tuning of automobile can effectively reduce the noise pollution. Buildings can be designed with suitable noise absorbing materials for the walls, windows, and ceiling. Workers should be provided with equipment such as earplugs and earmuffs for hearing protection. How to reduce noise pollution? शॉर्ट में हमने देखा वही चीजें यहाँ पे है, कुछ और पॉइंट्स है इसमें। टर्न ऑफ अप्लायंस एट होम एंड ऑफिसेस। सेकंड, शट द डोर व्हेन यूजिंग नॉइजी मशीन्स। यूज earplugs, lower the volume, stay away from noisy area, follow the limits of noise level, control noise level near sensitive areas, go green by planting trees. तो गो ग्रीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, तो ये ग्रो ग्रीन जो है ये बहुत से पॉल्यूशन को रिड्यूस करता है। तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोइंग ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स हमको अपने घरों के आसपास सब जगह लगाना चाहिए, क्योंकि ये एयर पॉल्यूशन और साउंड पॉल्यूशन उसके अलावा सारी चीजों को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो आज का क्लास अब यहीं खत्म होता है। अब हम किसी दूसरे टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए फिर मिलेंगे। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है।